बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. इट इज़ क्लास 7th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश. टॉपिक हमारा है लालाजी. सेकंड लेक्चर है इसका. पेज नंबर 109. लेट्स रीड नाउ. There was no question that the man in my Pankha Kuri's house was suffering from a bad attack of cholera, and if he was to survive his path and my crude treatment alone would pull him through. For the only medical aid within miles was a brute of a doctor as careless as he was inefficient. इस बात में कोई शक नहीं था कि मेरे पंखा नौकर वाले मकान में पड़ा आदमी कॉलरा के खौफनाक हमले का शिकार था, और अगर इसे ज़िंदा रहना था तो इसका यकीन और मेरा देसी इलाज ही उससे इसमें से पार लगा सकता था, क्योंकि मीलों तक हासिल हो सकने वाली सिर्फ एक ही तबी मदद वो गंवार डॉक्टर था, जो इतना ही बेरहम था जितना कि नाअहल. I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hand. From my servants, I could expect no help, for they were of a different cost to the sufferers, and further, there was no justification for exposing them to the risk of infection. However, this did not matter, provided I could instill sufficient confidence to the man that my treatment was going to make him well. To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die and to give me the trouble of cremating him, but to make him well, and that it was only with his cooperation that this could be effected. मैं इस पतले से आदमी की देखभाल करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास देखभाल करने के पहले ही 3 मरीज थे. अपने नौकरों से मैं किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुब्तला आदमी की ज़ात से मुख्तलिफ ज़ात के थे, और इसके अलावा इन्हें छूत के ख़तरे में डालने की कोई वाजिब वजह नहीं बनती थी. तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बशर्ते कि मैं इस आदमी में ये भरोसा दिला पाता कि मेरे इलाज से वो ठीक हो जाएगा. इस मकसद से मैंने उसे बात साफ कर दी कि मैं उसे अपने आंगन में मरने के लिए नहीं लाया था, और ख़ुद को उसकी आखिरी रसूम निभाने या निपटाने की तकलीफ देने के लिए, बल्कि उसे तंदुरुस्त करने के लिए, और ये बात कि सिर्फ उसके ताउन ही से ऐसा किया जा सकता था. The first night I feared that in spite of our joint efforts he would die, but towards morning he relayed, and from then on his condition continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength, which cholera drains out of the human body more quickly than any other disease. At the end of a week he was able to give me his story. तो पहली रात मुझे डर था कि हमारी सांझी कोशिशें के बावजूद इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन सुबह होने के करीब वो ठीक होने लगा और उसकी हालत में सुधार आना जारी रहा, और सिर्फ जो करना बाकी रहता था वो ये था कि उसकी ताकत को और बढ़ाया जाए, जो कि कॉलरा किसी भी दूसरी बीमारी की निस्बत आदमी के बदन में से ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देता है. हफ्ता ख़त्म होने पर वो मुझे अपनी कहानी सुनाने के काबिल हो गया. And he was a Lala, a merchant. At one time possessed a flourishing grand business. Then he made the mistake of taking as a porter a man about whom he knew nothing. For few years his business prospered and all went well. But one day when he returned from a long journey, he found the shop empty and his porter gone. The little money in his possession was only sufficient to meet his personal debts, and barefoot of credit he had to seek employment. Thus he found with a merchant with whom he had traded, and for 10 years he had worked on 7 rupees a month, which was only sufficient to support himself and his son. His wife having died shortly after his porter robbed him, he was on his way from Muzaffarpur to Gaya on his master's business when he was taken ill in the train. As he got work on board of the ferry steamer, he had crawled ashore to die on the backs of sacred Gangas. वो एक लाला था, एक सौदागर, और किसी वक्त का एक खेलता फलता फूलता अनाज का कारोबार हुआ करता था. फिर इसने किसी ऐसे आदमी को पार्टर बनाने की गलती कर दी
کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا. کچھ سال کا کاروبار بڑھتا رہا اور سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، لیکن ایک دن جب وہ ایک لمبے سفر سے لوٹ کر آیا تو اس نے دکان کو خالی پایا اور اس کا ساتھی غائب تھا. تھوڑے بہت پیسے جو اس کے پاس تھے وہ صرف اس کے ذاتی قرض کو چکتا کرنے کے لیے کافی تھے، اور ساتھ ختم ہونے ہو جانے کی وجہ سے اسے نوکری ڈھونڈنی پڑی. یہ اسے ایک تاجر کے یہاں مل گئی جس کے ساتھ وہ لین دین کیا کرتا تھا، اور 10 سال تک وہ 7 روپے ماہانہ پر کام کرتا رہا، جو خود اس کے اور اس کے بیٹے کا محض گزر کرنے کے لیے کافی تھا. اس کی بیوی کا انتقال اس کے پارٹنر کے ہاتھوں سے لوٹے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہو گیا تھا. وہ مظفر پور سے گایا کو جا رہا تھا اپنے مالک کے کام سے، جبکہ راستے میں وہ گاڑی میں بیمار پڑ گیا. جب دریا پار کروانے والے اسٹیمر میں اس کی حالت بگڑنے لگی تو وہ خود کو گھسیٹتا ہوا دریا کنارے آ گیا تاکہ مقدس گنگا کے کناروں پر دم توڑ سکے. That is all about today's lecture. السلام علیکم.